Perhaps I told you my regret that I have a lot of basic classes to teach where I keep teaching the same basic stuff. I never get the chance to explore the more, I'll say, less common things, more important things. Important basic things are important, of course, but advanced lessons, I don't get the chance to explore those. Virtue is its own reward. Socrates said that. Virtue is its own reward. Some people say, why do I have, what's the point of having virtues? What do you get when you have virtues? Not everybody has virtues. So you have virtues, you shouldn't be asking for anything more. Not everybody returns somebody's extra money they give. When a shopkeeper gives you extra money, returns you extra money by mistake, and you don't keep that money, and you think somebody says, "Kya fayda hua?" That person will never understand. It is the fayda that I have the ability to do it. Virtue is its own reward. You don't look for another reward because of virtue. Not everybody gets virtue. Not everybody thinks that way. I mean, somebody said, Socrates said, I have a slightly different opinion though. I don't think virtue is something people are born with. I don't think it is part of the instinct. I think it is mostly part of your upbringing, nurture. Nature makes us hungry, and hungry people do not know rules. They know they want food, right? Nature makes us hungry, and hungry people don't know rules. They just want food at any cost from any way. The right way, the wrong way, whether they are getting it from somebody's consent or they're stealing it, it doesn't matter to them. Nobody's going to die hungry. They will steal if they're hungry and they don't have food. I don't know anybody who will die of hunger and not steal. Yes, if you're not getting a chance to steal, that's another thing. If everybody has put a gunman to guard their roti, then you are going to die hungry rather than die of a bullet. There are other things. Sometimes you hear of incidents where people in societies died of, they just starved. Okay, they could not have meals for a long time and they died. Well, a lot of them have so much of inhibition to tell people that they don't have food. Otherwise, there are so many beggars begging. They could have also gone out, beg, bhai, khana do, right? But they didn't do it because of their own inhibition that they have a certain reputation in society and they didn't want to compromise with that. And they thought maybe, and then one day they fell sick really badly and then they die. However, I think I may be missing a few angles here. I'm not feeling very confident on this topic. I don't think I know everything about why some people die of starvation because it doesn't make sense to me. I won't know why anybody in my neighborhood would die. Why would anybody die of starvation? I won't understand that. I mean, if I get to know that anybody in my neighborhood has got problems that they are not getting food, they don't have enough money to buy food, then I think society, we people, will help. I'll be the first one to do something. I won't let anybody die of starvation and have 3 meals
in my for myself every day. It won't, I won't be able to have that or do that. I will have such a guilt, you know. So obviously, I think there are lots of people like me who will not like to know that somebody in their neighborhood is dying of starvation. They would share their own meal. Even if I'm not very rich, I would just share some of my meal. Bhai, to khana to kha le. You know what I mean? So really don't understand why some people die of starvation. I think they live in those areas where most people are in the same situation. Maybe. And that's when I question government's scheme, you know, like what do you call it? Public distribution system, Jan Vitran Pranali, where they give cheap food or free food, ration, ration food. Well, so I wish I had a class where I could just come and talk about different stuff, but we have a syllabus to follow and a most basic syllabus. So let's start. I said a most basic syllabus, not the most basic syllabus. And it was not an error, by the way. If you listen to the recording, I said I have a syllabus to teach, a most basic syllabus. So you might have studied that we use the before superlatives, which is correct. No, but here I said a most basic syllabus. Okay, this is also correct. Now you'll say, how? Most is a superlative. It is an exception case, which means very basic. A most humble person is a very humble person. Okay, the most humble person is the superlative in the group, but a most humble person is a very humble person. When you replace the with a, then it becomes before most, it becomes very. There's so many things to teach. And that's why I want to teach a class where a skill, yes, they will develop, but that should not be the focus. The focus should be to share information. If I teach a class and those students become teachers of English, I'll feel so confident that they won't teach anything silly unless they become overconfident, arrogant, you know. If as long as they stick to what I've taught them and they teach that stuff, they will not teach anything silly. Okay. So we are ready to start Unit 7, but what about Unit 6 practice book exercises? Have we done them all? No. Last 2 pages of Unit 6 in the practice book. The last thing we did was the listening section. That was the day when I got really annoyed. Yes, the listening section. Right. So right side exercises on the same page. You guys will say, sir, you did a good job, because everybody in my family feels I've done a good job. The only thing is, I tried a little bit of, because there was less of, not enough laminates and mica. So I used a little bit of white on the surface, and that doesn't look very good. But when I when I put the TV on it, when I hang the TV, it will not look that bad. It's a nice 8 by 6, 8 by 5, you know, TV unit. Just one more day. Hopefully tomorrow. On the 16th, I'm getting the handles. And before that, I'll be able to do everything else. Today is the 12th. Okay, let's see. So exciting. I was so excited last night. I was just not able to sleep. I kept sitting up and staring at what I did. I said, wow, good.
Next project will be even better. Whenever I start, I won't have time for next 3 4 months. For next 3 4 months, I will have other priorities. I won't do anything for next 3 4 months. But once I'm done with my next responsibility, then I'll definitely start another project. Maybe I'll make my kitchen. I'll give a makeover to my kitchen. It will cost 25,000 rupees, but it will look great. Vocabulary, describing feelings. Match a line in A with a line in B. The concert was boring. The concert, what page number is it, guys? The concert was boring. So I left before the end. And I say it in a certain rhythm, value that rhythm, okay? That intonation. The concert was boring. So I left before the end. Unless you develop this intonation, it's going to be hard. In my intonation, if you notice, I do not stress the word was. I say the concert was boring. The concert was boring, right? So I left before the end. Hmm. Two, I was very tired. Oh, these things happen, but I'm asking you to do, pay attention to the intonation. It takes time. Listening, 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 like milk becomes koa, but you have to boil, 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 boil. It doesn't start becoming koa the moment it starts to boil. It takes time. Okay. I was very tired, so I went to bed. The little boy was excited because it was his birthday. Because it was his birthday. I'm interested in modern art, so I love the exhibition. Why are you annoyed with me? Oh, I'm sorry. Oh, yeah. I just couldn't wake up early enough because I went to bed very late again last night. Why are you annoyed with me? Hmm. Why are you? In this sentence, annoyed is a verb or is an adjective? You tell me. It is an adjective. Be verb. Why are you? Are you? Be verb. So it is an adjective. Why are you annoyed with me? Because you are late again. What is the part of a speech of late? He will tell me. Mohit will tell me. Mohit. Sorry, not Mohit. Tawheed will tell me. Tawheed. Beta, why are you annoyed with me? Because you are late again. In this sentence, you are late again. Tell me the part of a speech of the word late. Is the question so difficult? I'm asking you to tell me the part of a speech of the word late. What is it the first time that I'm asking you? It was one of the instructions. Ki notice the noun, verb, adjective. Yaad hai? To tell me the whether late is a noun, verb, adjective. What is the part of a speech of late? You are late again. बोलते हैं ना भाई यू आर लेट अगेन तो महसूस करने के लिए जरूरी खाली देखो समीर होता है क्या ना लोग उसको ट्रांसलेट करके महसूस करते बच्चे कहते हैं तुम लेट हो गए हो फिर से ठीक है समझ में आ गया बस छोड़ देते हैं इससे क्या होता है कि तुम अगले स्टेप के लिए तैयारी नहीं कर रहे अगर किसी के पास आज बहुत पैसा और पार्टी करने लगे तो उसको क्या कहेंगे अरे पगला कल के लिए भी सोच आगे ना तो वैसे ही एक लाइन सीखना उसकी हिंदी कर लेने से हम अगले सेंटेंस के लिए कोई तैयारी नहीं की बेटा कोई तैयारी नहीं की कि हम अगला सेंटेंस कैसे समझेंगे और जो ये सवाल मैंने पूछ दिया तो ये तैयारी है अगले सेंटेंस के लिए कि मतलब आगे कोई मुश्किल सेंटेंस आएगा अब बेहतर तैयार रहोगे
तो मैंने पूछा यू आर लेट अगेन में लेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव. यू आर लेट अगेन. यू आर late again, and the verb is obviously. I did not ask any difficult question. मैंने एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछा जो सुनते के साथ आप आंसर करते हैं. यू आर अनॉयड, यू आर लेट. अब आप अगर बार बार ये करेंगे ना तो आपको एक समझ पैदा होगी. यू आर समथिंग, नॉट समथिंग इन अ सर्टेन वे. यू आर अनॉयड. Annoyed is not something, beta. You are annoyed in a certain way. You are in a certain way. How? You are annoyed. You are happy. You are late. You are in a certain way. Adjective होता है वो. You are rich. You are poor. You are in a certain way. आप समझ रहे हो मेरे बोलने का तरीका? You are in a certain way. हाँ, तो ये adjective होते हैं वहां पे. You are late again. Good job. इतनी देर क्यों लगी बेटा आपको समझने में मेरी बात? क्यों क्यों लगा? मतलब सब आवाज नहीं पहुंच पा रही थी वहां तक? Okay. One thing we can do, we can come closer to the teacher. Come closer to the computer table. Yes, 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 all of you. Come closer. 1 feet, 1 foot forward, 1 foot, 1 foot closer. Yeah, better. And we need to turn on this fan. Yep. And turn off that fan, Samir. Yeah. Switch number 3 from the left. That was, yeah, switch number 3 from the left. I'm worried. I am, I'm worried. Verb or adjective? I am in a certain way. Which way? Worried. I am worried because it's 10 p.m. and the children aren't home yet. And the children aren't home yet. Better replace home with another word. Replace home with another word without changing the meaning. Okay? I said without changing the meaning of the sentence. No, beta, we can't do that. Okay? Mm, only home will go away, every word will stay. I'm worried because it's 10 p.m. and the children aren't home yet. School? School and home are not the same thing, sweetie. He made the same mistake. I said the meaning of the sentence should not change and just home word will be replaced with another word. Every other word in the sentence will remain the same. Please understand my instructions. Absolutely correct. Why did I ask this question? To help you understand the meaning of home here. And that boy Tawheed replaced home with house. I'm worried because it's 10 p.m. and the children aren't house yet. Okay. In this sentence, how home is not a noun. Is not a home is a noun. My home, your home. Okay. Come home. No, come home nahi. Sorry. Come home में home noun नहीं होता. Okay. Come home में home noun नहीं होता. Okay. My home, your home. Okay. This in this phrase, home is a noun. But when you say come home, go home, and here be home, what is the verb here? Be. I am home. The children aren't home. The children aren't home. Aren't means be verb na. So be home, come home, go home, be home. In these sentences, home is an adverb. Home is an adverb. Okay? Home is an adverb. Go home. Come home. Be home. Now let me explain. Go there.
come here, be here. Here and there are both adverbs, not nouns, right? Go there, come here. Go home, come home. So just like there and here, home is also an adverb in these phrases. And that's the reason we don't say to, come to home and go to home. We say come home, go home. And the children aren't home yet. In this sentence, home is an adverb. The children aren't here yet. Just like you said, the children aren't here yet. Now, if I replace home with the word here, the meaning is still the same or different? Yeah, that's the point. Okay. Um, I'm worried because it's 10 p.m. and the children aren't home yet. And the children aren't home yet. बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं. The children aren't home yet. ओके हिंदी में घर वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में घर बोलते समय ना आप नहीं सोच पाएंगे नाउन वर्ब एडजेक्टिव, क्योंकि आपने हिंदी ग्रामर वैसे नहीं पढ़ा है. एम आई राइट? इन इंग्लिश these parts of a speech are more important than Hindi. In Hindi, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण are important, no doubt. But in English, these words, noun, verbs, adjectives are more important, and there is a reason, beta. Why? अगर संज्ञा है हिंदी में और इंग्लिश में नाउन, हिंदी में सर्वनाम, इन इंग्लिश प्रोनाउन, हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब, हिंदी में क्रिया विशेषण, इंग्लिश में एडवर्ब, हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव, सब पांचों के पांचों हैं. तो फिर ये कम और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएंगे? हिंदी में कम इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में ज्यादा इंपॉर्टेंट. हिंदी में शब्दों के बारे में ये जानना उतना जरूरी नहीं होगा आपका, ठीक है, कि उसके बगैर आप परेशान हो जाएं या उलट पुलट कर दे सेंटेंस को. इन इंग्लिश कोई भी नया वर्ड अगर आपने बोलना है, ठीक है, सीखा है, तो आपको मैंने ओन वर्ब से सिखाया था, राइट, ओ से सिखाया था कि कैसे आप बोलेंगे कि मैं आपके 10,000 रुपए का कर्जदार हूँ, ठीक है, आई ओ यू 10,000 रुपीज. अगर आपके क्लास में करवाया था तो मुझे याद नहीं है कि आपके क्लास में या किसी और क्लास में, बट आई इट वाज योर क्लास. तो पार्ट ऑफ स्पीच जानते के साथ आई ओ यू बोल सकते हो आप. एंड इफ यू थिंक ओ इज एन एडजेक्टिव तो आप बोल दोगे आई एम ओ, ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच जानने से आप सेंटेंस कैसा बनाएंगे ये डिपेंड होगा, डिपेंड इस बात पे करेगा कि आप कैसा सेंटेंस बनाते हैं. अब ये इंग्लिश में क्यों जरूरी है जानना, इसका जवाब लीजिए. हिंदी में एक वर्ड ज्यादातर अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं जाता खुद ब खुद. अब जैसे स्कूल हिंदी में लेते, इंग्लिश में लेते हैं, स्कूल इज अ नाउन, बट स्कूल इज अ वर्ब टू. ही स्कूल्ड मी, ही, इसका मतलब होता है बहुत जबरदस्त तरीके से हराया, सिखाया, उस हार में सबक भी सीख दिया, ऐसा भी होता है इसका मतलब. कम हियर प्ले विद मी, आई विल स्कूल यू. कम प्ले विद मी, आओ मेरे साथ खेलो, आई विल स्कूल यू. ऑलराइट. तो स्कूल एक वर्ब भी है दोस्तों. तो एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व वेदर दिस वर्ड हियर इन दिस सेंटेंस इज फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पीच ए और पार्ट ऑफ स्पीच बी और सी. ठीक है. मीन मैं बोल दिया मैंने, यस सो मीन, इट्स एन एडजेक्टिव. नेटिव स्पीकर और टेंशन अलग है, आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप तो आदत से बोलते रहते हो. बट व्हेन यू लर्न, यू आर सो मीन. व्हाट डज दिस वर्ड मीन? वर्ब. What does this word mean? It's a verb here, mean. मतलब होना. What does this word mean? Does. This word means something. This word means something and I don't know what it means. So what does it mean? It's a verb. तो ये समझ बनाने के लिए, खाली रट्टा मारने के लिए, अभी मुझे पता अभी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होगे आप मीन को, बस आदत है बोलने के लिए. व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज इट मीन, आप बोले होगे दो चार बार, लेकिन कुछ समय लगता है. मैंने कहा ना, दूध उबलने लगता है, इसका मतलब खोआ नहीं बनना शुरू हो गया. लेकिन बिना उबले खोआ बनेगा क्या? लेकिन वो उबल रहा है, इसका मतलब तुरंत खोआ नहीं बन जाएगा. खोआ बनने का प्रोसेस शुरू हुआ है, बनेगा. हैव पेशेंस. तो दैट इज हाउ यू लर्न इंग्लिश. हर साल मुझे नए नए एनालॉजीज ढूंढने पड़ते हैं आप लोग को समझाने के लिए कि कैसे आप पेशेंटली काम करें. अब खोआ बनवा रहे हैं हम रोज, देखिए
अब ये मेरा एनालॉजी चलेगा का 6 से 7 महीने अलग अलग बैचेस में कि दूध बनने से खोआ बनता है, राइट? तो हाँ बनता है। तो वो बोल रहा है काहे नहीं बन रहा? अरे वेट कर, सुनने से इंग्लिश सीखते थे, सुने तो थे, कहाँ सीखे? अरे वेट कर। यू नो, समझ आई बात? ओके, लेट्स कंटिन्यू. I'm worried because it's 10 p.m. and the children aren't home yet. So a newly married husband comes home in the evening and says, "Sweetheart, I'm home. Where are you?" कैसे कहता है वो? "Sweetheart, I'm home. Where are you?" When he doesn't find his wife in the kitchen or in the bedroom, and he checks the bathroom. "Where are you?" "I'm home." "I'm home" मतलब मैं घर हूँ. सिचुएशन पता है ना? शाम में आया है और बोल रहा है, "Sweetheart, where are you? I'm home." तो अभी भी अगर कोई इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेगा, मैं घर हूं, इसके इतना सुनने के बाद मैं कहूँगा कुछ थोड़ा सा खाली जगह छूट गया है अंदर में, कुछ वायरिंग कम हुई. राइट? Berlin is a very exciting. Everybody clear? Home. Today you understood home is an adverb as well, not only a noun. When you say my home, then it's a noun. My is a possessive adjective. Home is a noun. But you say go home. You're not feeling okay. Go home. Go home. Home is an adverb in English. आइडिया वही है, देखो घर ही जाने की बात हो रही बेटा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह काम कर रहा है? एडवर्ब है. अगर ये नाउन होता तो कैसे होता बेटा? अगर ये नाउन होता होम तो क्या बोलते? गो टू होम बोलना पड़ता ना बेटा. गो टू स्कूल बोलते हो, राइट? स्कूल इज अ नाउन. कोई भी नाउन होगा. सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्नीजिंग. गो टू द बैंक, गो टू स्कूल, गो टू द पार्क, गो टू पटना, गो टू. अब बोलोगे सर बुला लिए पास में और छीके जा रहे हैं. हाँ, इट वॉज ऑल द प्लान टू मेक यू गाइस सिक. आई न्यू ऑलरेडी that I was gonna sneeze so much. So I said, okay, I want to make some people sick. How do, what do we say raisins in English? Ah, लो, I told you. किशमिश को क्या बोलते हैं? पहले ही बता दिया. कई बार होता है ना, मैं आंसर ही पहले कर देता हूँ. We call them raisins. Berlin is a very exciting city. Continue. Hmm? There's so much to. A lot of students feel that's why this institute is running well without any advertisement, zero advertisement. Because the students here believe it's an exciting place to learn English. There's so much to learn here. Things that nobody talks about. बेटा आप लोगों को पता है ना, चैप्टर्स होते हैं, नाम होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वॉइस नरेशन, बड़े बड़े वीडियोस यूट्यूब पे. अगर वो सब सीखने से कोई बोलता है इंग्लिश, तो कभी किसी टीचर के घर में चूल्हा नहीं जलता इंग्लिश के, क्योंकि देयर आर सो मेनी फ्री वीडियोस present, but now you have to be with somebody, listening to them, interacting with them, and asking your doubts, sharing your doubts with them, and they need to give you solutions to those doubts. And doubts are not कि ये टेंस नहीं समझ में आता. Doubts अलग अलग तरह के होते हैं. आप लोग कई बार पूछे हो मुझसे, राइट? अजीब अजीब डाउट्स होते हैं जो पहले किसी को नहीं हुआ, आपको हो जाएगा. Okay. Berlin is a very exciting city. There is so much to do. And this is an exciting place to learn English. There is so much to learn here. That's why we have long courses, 2 years, 3 years. Students can stay here and keep growing. If you are here for the third year, and if you feel that you are nahi seekh rahe, I'll return your money.
If you stay here for 4 years, you will still feel, यार, ये सब तो पहले पता ही नहीं था. So, after all, English is a language, full-fledged language. You can't master it in 6 months, 8 months. It is stupid to even think of it. Yes, you learn a lot of basic stuff which guides you, to speak better. But then there is a lot more to learn as you go along. The party was very interesting. The party was very interesting. Be memory में जाना चाहिए line. Party was interesting. Yeah, the Berlin is exciting. The class is exciting. Yeah, places are exciting, and we feel excited and interested, right? ऐसे चलता है. So the party was very interesting. I met a lot of nice people. And now complete the sentences using each adjective once. Number one, I like the Times because it's an interesting newspaper. Speaking of newspapers, do you read any on a regular basis? Which one? Hindustan. You should switch to an English newspaper now, maybe. I know you won't understand everything, but it will be good for you. Not for your speaking. Some people say read the newspaper, it will help you with your speaking English. I say, what's the connection, man? Do you have an idea what you're talking about? Do you have any idea of what you're talking about? Reading has no connection with speaking. And no matter how much a person reads, will never feel very confident speaking unless they listen. The people who read can write better. There is a direct connection. Reading is an input thing, and process, and writing is the output process. When you read well, then you are able to write better. When you read a lot, when you listen a lot, then you speak better. If I speak better, it's not because I read a lot of newspaper, because I spend a lot of time listening. Hmm. Go on. The Times. My favorite is the Times of India. I used to read it very regularly, every day. And some people say the Hindu and this. And I say the Hindu is not an exciting, interesting newspaper at all. It just deliberately uses words which are not common. Deliberately. They have people who just change words, like the people who write the stories, news stories, and editorials sometimes. They keep simple words there. The editors there, they replace them with some uncommon words. They take pride in being that way. Okay, fair enough. I am not interested. I like knowing words which are in use. Okay, I don't want to just, I'm not a native speaker of English. For me, communication matters. Look, if I were a very rich man, I could afford to splurge a little bit, waste my money on things. But if I'm a hard working person who earns his money very hard, I can't afford to splurge. Splurge means waste on something you want. Okay, so all my life, I was a Hindi speaking person, right? I could not speak English until I was 2021. And when I started, then I had a fear, insecurity that I don't know a lot of words. So, which words I wanted to learn? Words which are in use or words which are a luxury to know? Why do I learn those words which are just a luxury to know? I can show off somewhere that I know these words. No, you can do that when you reach a level where you know all the words in function, words in use, common words in use. That was never the case. And that's the situation for you guys. There are lots of words which are in use and you do not know them. So you should prioritize learning those words or learning words which are not in use because the Hindu writes them. They will never be asked in the exams. There are a lot of words the Hindu uses, they will not be asked in exams. I can guarantee that. Bring me today's the Hindu, and I will show you there are lots of words, and I'll ask all the teachers, tell me which exam asked these words. They are just a luxury to know. Somebody who speaks English as a native means there are lots of Indians.
who speak English as a native, means they grew up speaking English. Their parents spoke English to them. For example, Karan Johar's children. Do you think they are second? For them, English is the second language? No. For them, English is the first language. Karan Johar talks to them in English. Their dadi, Karan Johar's mother, talks to them in English. Even the servants talk to them in English. The servants also speak English somehow. Not very well, but they do. So these children are 3, 4 years old and they speak English. So for them, English is not a second language. Okay. They know all the common words because now they will go to good schools. They'll take English literature. They will learn lots of words. They can enjoy learning some uncommon words when they read the Hindu. And some people who are insecure about their vocabulary, but they are stupid, they will read and think they are improving their vocabulary. Poor people should spend their money on things which are useful, not something that can be only put to display as a showpiece, something that you will use. So I hope I explain my reason why I do not consider the Hindu a good newspaper for you guys at all. You will read the Hindu and you will keep coming across lots of uncommon words. It will happen with you when you read the Times of India as well. But the words you will learn from the Times of India will be more useful to you. And the Hindu words will be like, what the hell? You learn them, but you will never use them. And if you use them, nobody uses, other people don't use them. So they won't understand maybe. When I listen to the BBC World News, okay, all the words they use, I love them because they're all common words and in use. So my communication was not to impress ever. I never learned English to, maybe initially, because I thought speaking English is an impressive thing, That's it. But when I talk to you guys, I take pride in expressing myself fluidly rather than using uncommon words. I know a couple of people, several people actually, who speak English, try to use uncommon words, but mess up their English, the word order, the grammar part. They mess up while speaking just because their focus is on using uncommon words so that the other person feels, kaun sa word bole? They feel, their ego feels satisfied when people don't understand them. I feel more satisfied when people understand me. That's the difference. I'm a teacher. I know if my listeners understand what I'm saying, they'll benefit from it because Sir Stephen, क्या नाम बताया मैं भूल गया, जिनकी सेकंड लैंग्वेज की थ्योरी दी थी मैंने, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी दी थी मैंने, बताई थी कि उन्होंने दिया था। हाँ, अच्छा मैं भूल गया, कोई बात नहीं। तो ही सेड कि वो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होना चाहिए। मतलब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होनी है तो जो आप लिसनिंग करोगे वो कोई भी लिसनिंग से नहीं हो सकती। उन्होंने एग्जाम स्पेशली एक्सप्लेन किया था कि एक बच्चे को के सामने आप खूब सारी पॉलिटिक्स की बात करें और न्यूज़पेपर न्यूज टीवी चला दें चारों तरफ, उसको खूब एक्सपोजर दें लैंग्वेज की, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट ना दें, बच्चा कभी बोलना नहीं सीखेगा। मतलब एक छोटे बच्चे के सामने, 2-3 साल के बच्चे के सामने आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो करते हो, कैसे करते हो, मतलब बाबू मतलब छोना, ऐसे करके बात करते हो ना, बेटा दूध पिएगा, ऐसे करके बात करते हो ना, वो सब ना करके आप उसको किसी पॉलिटिशियन की खूब सारी स्पीचेस सुनाइए, वो भी तो लैंग्वेज है। वो बच्चा कभी बोलना ही नहीं सीखेगा। क्या मिसिंग होगा? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, इनपुट है, क्या नहीं है वो? कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझने लायक। ओके, so because I'm aware that comprehensible input has a special role and I'm a teacher, so mostly I talk to help people understand what I'm saying. I simplify my statements when I happen to say something in a more complex way. Okay, coming back. I like the Times because it's an interesting newspaper.
I don't want to watch the football. I'm not interested. Hindustan Times is even easier for you guys. The sentences in Hindustan Times are even easier, very much easier than the Times of India. So if you are thinking of starting to read a newspaper, Hindustan Times will be a better choice as the first newspaper you want to read, and then move on to the Times of India with time. You know, I like the Times because it's an interesting newspaper. I don't want to watch the football. I'm not interested. I don't want to watch the football. Don't want to watch the. I'm not interested. Interesting newspaper. I'm not interested. I'm interested. बस यही ध्यान में जाना चाहिए. Three. You look boring. अभी वही बात कर रहे थे. You look. कुछ लोग यहाँ अभी confused हैं. Politicians are boring. Movies are boring. Some movies are boring. You feel bored. आप कैसा फील करते हो वो ईडी से बताते हो. You look bored. Don't you like Oprah? You feel bored. You look bored. Don't you like Oprah? Oprah is a program, singing, musical program. Uh, it's classical music. Nobody understands. Those who don't understand English won't understand opera. DDLG के बारे में बोलिए. DDLG में ओपरा के यूज के तो मतलब I'll show you a video. Opera is classical music, very high pitched singing. To a to a common person, it will appear like crying. I hate politicians. They're so boring. Vinay sir is so boring. All the time he gives lectures about English. Hmm, I feel that way. My wife says I've become boring. My daughter says I've become boring. My nephew says I've become boring. 3, 4 years, ever since I crossed 40, things are not the same. I can't take excitement and interest in things which used to be fun, in the past. Hmm. Uh-huh. Hmm. She, मैंने बताई थी आपको स्टोरी ना गया मैं जो I went to an institute, talked to the teacher and the students there. She's from there. She's the same lady. वो आप 15 मिनट वेट करी थी नीचे सर अपना नंबर दे के जाइए नहीं जाएंगे आप ऐसे. I was feeling a little hesitant because I wasn't there to damage somebody's business. अगर मैं वहां गया किसी I talked to the teacher and I talked to the students. I asked them questions about what they were doing and why they were doing it and how confident they were that they were going to learn that way, how long it was going to take, all these things. Questions about learning English, the process, because I disagree with the process. It's a total waste of time. Why I use total, not partial? Because they are there to learn, to develop an understanding of English. Speaking automatically comes. They were, by the way, you guys have studied English for 10 years, more than 10 years. Those 10 years did not contribute much to your speaking or understanding. You still feel confused. So if somebody does the same things for 6 more months, how would it change? If you did something for 10 years and it did not bring the result,
then how come 6 months will bring the result? The same thing. अगर 10 साल करके नहीं हासिल हुआ जो चीज, तो 6 महीने में वही चीज करके नहीं होगा, कुछ अलग करके हो सकता है। तो कुछ अलग करो ना। Your school classes didn't have audio files, did they? They did not use audio aid in the class. The teacher never talked to you in English. लेक्चर कहानी इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेशन, और इसमें लड़के खुश, ये वर्ड अंडरलाइन करो, वो वर्ड अंडरलाइन करो, इसकी ये हिंदी, उसकी वो हिंदी। किए ना तुम लोग कि नहीं किए? यही था ना इंग्लिश क्लास का ये काम करने का तरीका। मैंने भी वैसे ही पढ़ा है। अब मैं छोटे बच्चे को पढ़ाता हूँ। आई टीच यंग किड्स इन क्लास 3 4। आई डोंट टीच देम द हिंदी ऑफ द सेंटेंसेस, ये इसका ये हिंदी हो गया, इसका ये हिंदी हो गया, बिकॉज माई जॉब इज टू हेल्प देम लर्न इंग्लिश। मैं हिंदी क्यों बताऊं उनको? हाँ, आई एक्सप्लेन what is written there with my, that's my skill as a teacher. I use my body, I use my some expressions, I do use some Hindi sometimes, but I do not translate them. वो समझ जाते हैं मतलब ऐसे भी। तो तुम ट्रस्ट नहीं करते, तुम्हारे पास स्किल नहीं है। कहते हैं उनको जरूरत है इस चीज की, वो भी समझ जाएंगे। अब वो कहीं बाहर से आए हुए बच्चे हैं मेरे क्लास में, जो छोटे बच्चे हैं, द स्टूडेंट्स हु कम आफ्टर यू, दूसरी दुनिया के हैं, वो भी बिहार से के बच्चे हैं। फिर किसी स्कूल में उनको भेज दो, फिर वहीं पढ़ाई हो जाएगी शुरू, ट्रांसलेशन मेथड। फिर वो नीचे जाने लगेंगे। वो काफी ऊपर आ चुके हैं पिछले 3 4 महीने में। All of them appreciate English now. When I talk to them in English, they understand what I'm saying. सारे इस प्रिंसिपल्स का क्या कहना है? छोटे बच्चे इंग्लिश समझते नहीं, इसलिए टीचर इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, माता पिता इंग्लिश नहीं बोलते। अरे सॉरी, आई कैन यूज फाउल लैंग्वेज फॉर देम, मेरे से बहुत गुस्सा आता है मेरे को उन पे। इतने घटिया बात करते, कहते हैं माता पिता इंग्लिश बोलेंगे ना तब बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। ये तुमने स्कूल क्यों खोला रे? अगर माता पिता के इंग्लिश बोलने से तू इंग्लिश सिखाएगा, तो इंग्लिश मीडियम क्यों बोलता है उसको? और फिर ले एडमिशन, भाई तुम्हारे माँ पापा इंग्लिश बोलते हैं, एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तूने कहा उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऑल द बुक्स आर इन इंग्लिश, काहे? व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हिंदी मीडियम स्कूल एंड एन इंग्लिश मीडियम स्कूल? स्टॉप कॉलिंग योर स्कूल एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, चेंज द बुक्स टू हिंदी मीडियम। इफ यू हैव दिस कंडीशन टू पुट, कि बच्चे तभी इंग्लिश बोलेंगे जब उनके माता पिता बोलेंगे। छोटे बच्चे इंग्लिश नहीं समझते। अरे तुम्हारे टीचर्स 7,000 रुपए सैलरी देते हो, वो इंग्लिश बोलने वाले कहाँ से होंगे? 8 घंटे पढ़ाएंगे, 6,000 7,000 रुपए सैलरी है, फॉर स्मॉल चिल्ड्रन क्लास 3 4। प्राइमरी स्कूल में इस तरह नहीं देते सैलरी वो। ओके, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सैलरी, इट्स अबाउट द होल माइंडसेट। द टीचर्स आल्सो हैव द सेम माइंडसेट। I'm just telling you that I teach those children. I do not translate my sentences. The sentences written there, there are stories, there are poems, right? And the children are learning, and they're learning much faster. But Sara, oh, responsibility they want to put on the children and the parents. भाई बच्चे नहीं बोलते, बच्चे नहीं समझते। अरे तुम किस लिए हो? मैंने तो ये नहीं कहा था बच्चों को आने के कि भाई ये लोग तो इंग्लिश नहीं समझते, तो आई कांट टीच देम इंग्लिश। That's why I've been hired, because they don't understand. You guys got a very bad deal in your English class all your life. It was not your fault. Hooray! We are on holiday. I'm so. Yeah, and it's very exciting when you go abroad for the first time. Underline the word abroad. Hindi is Videsh, everybody knows, but वो तो मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं तो सिखा दूंगा कुछ और। पार्ट ऑफ स्पीच बता। कितनी देर लगी इसको कैलकुलेशन करने में? पूछोगी पहले से सोच के बैठी हुई थी अब्रॉड के बारे में कि एडवर्ब होता है, यहाँ कुछ चला उसके दिमाग में? गो होम, गो देयर, गो अब्रॉड, चला कि नहीं चला तुम्हारे दिमाग में? ये इसको कहते हैं लर्निंग। And I am very proud of the way I teach, because I get students like her, I get great results. उसमें ये नहीं कि ढेर सारी इंग्लिश लेके आई है, समझ लेके आई है। कितनी देर लगाई उसने? गो होम, गो देयर,
गो अब्रॉड, यही कैलकुलेशन उसके दिमाग में चला चला कि नहीं? यही कल कल से वो रट के बैठी हुई नहीं थी वहां पे, अब्रॉड वर्ब होता है सर, पूछेंगे बताना है हमको। नहीं, नो प्रिपरेशन इन माय क्लास, ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट आई एम सेइंग एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। तुम लोग कहाँ चले गए? क्यों देर लगा दी? ले लो सबक, सबक ले लो, एक लेसन ले लो। अभी बताया था, गो होम, होम इज एन एडवर्ब, रिमेंबर? 5 minutes, 10 minutes ago, 15 minutes ago, I explained home is an adverb. Go home. अभी आए सामने क्या? Go abroad. और तुम लोगों को टाइम लगा, पता है ना क्यों? बिकॉज तुम्हें मेरी बात याद नहीं रही। कोई किसी को तो रही। अगर एक भी ऐसा स्टूडेंट क्लास में रहता है ना, ऑब्जर्व करके मेरी बात से बेनिफिट करने वाला, तो सब रियलाइज करते यार हम कुछ गलत कर रहे हैं। किसी का जवाब फटाक से सही कैसे हो गया ऐसे? रट के नहीं आई हुई है, उसको पहले से शायद नहीं भी पता हो कि ब्रॉड एडवर्ब होता है, बट द वे शी सॉ इट हियर रिटन इन द अरेंजमेंट, शी न्यू एडवर्ब। गो अब्रॉड, इट्स वेरी एक्साइटिंग टू गो अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप लोग अगर कुछ सबक ले सकते हो, अभी एम्बैरेसमेंट फील हुई होगी कि हम लोग स्लो हैं ऑब्जर्वेशन में। तुम्हारा ग्रामर नहीं कमजोर है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कमजोर है। यही ऑब्जर्वेशन जो उसने किया। इट्स वेरी एक्साइटिंग व्हेन यू गो अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम। याद है सम डेज अगो आई टॉट यू, पहली बार क्या था इंग्लिश? फिर से आ गया फॉर द फर्स्ट टाइम। जिसको उस समय ध्यान में रहा होगा, वो रिवीजन मिला कि नहीं मिला? फॉर द फर्स्ट टाइम। और कुछ लोग आज भी क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम। हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रामर इंप्रूव हुआ हमारा। जिसने फर्स्ट टाइम बोला उसने गलत बोला, उसने दो वर्ड छोड़े, एक प्रीपोजिशन छोड़ा, एक आर्टिकल छोड़ा। और हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर द फर्स्ट टाइम। हम बेहतर इंग्लिश बोल रहे हैं। व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट टाइम, गलत इंग्लिश है ये। लेकिन हिंदी बोलने वाले को कैसे पता चलेगा? उसको लगेगा सही तो बोल रहा है। जब हम मिले पहली बार, जब हम तुमको देखे पहली बार, व्हेन आई सॉ यू, पास्ट टेंस तो यूज करवे किए, वहीं तक रहता है वो सब। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दोस टीचर्स इन गया एंड आई टोल्ड देम हे दिस इज रॉन्ग, उन्होंने सरप्राइज थे, क्या गलत है इसमें? भाई जब तक ट्रांसलेशन मेथड से सीखोगे, यू वोंट रियलाइज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आपको सब सही लगेगा। व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट टाइम, एब्सोल्युटली नॉट ओके। व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, 7, why would I speak Hindi? Why would I speak Hindi? No, no, ask, tell me the logic. He made mistakes, of course. He was not as comfortable. Look it up. You know, दूध उबल रहा है, खोआ बन रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? अगर ज्यादा देर तक बनाएंगे तो बहुत सारा खोआ बन जाएगा। मैंने बहुत दिन तक दूध उबाला है बेटा। जो लोग 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, और उन्होंने 18-17 साल में इंग्लिश बोलना शुरू किया, ठीक है, उन्होंने 6 साल दूध उबाला है। खोआ बना होगा। मैंने 30 साल दूध उबाला है। ओके। और जहां तहाँ थोड़ा बहुत खोआ लगा रहेगा, छः छः थोड़ा सा उबाला है तो। लेकिन जो ज्यादा देर उबाला, बहुत खोआ है वहां पे, है ना? इसलिए कोर्सेज लंबे हैं बेटा यहाँ पे। खोआ इतना है ना? She eats with her mouth open. She eats with her mouth open. It's very annoying. Very annoying. She eat anybody who eats with their mouth open. They are very annoying. I just can't stand that. In my house, we have changed our culture. There was a time when we were kids, we all ate with our mouth open. Everybody. You could see inside what we were eating. And as a kid, I did. Actually, I wanted to do it because I had a mama. I still have him. And he
used to eat that way. And he would make a lot of noise as well while eating. If he was eating in this room, you could hear him in the other room, next room. All right. And we loved him. And that's why we wanted to copy his style of eating. And we felt happy when we made a noise. Much, much later, when we were in high school, we learned that good manners, it they don't ask you to eat with a mouth with your mouth open or with any noise. You keep your mouth closed, and nobody should hear what you eating. Okay. Of course, now I have learned, and I everybody in my family eats with their mouth closed, and we don't make any noises. And when those relatives come here, we find it very annoying now. The same thing that as a kid we found very exciting, and we wanted to copy it. That's called change. There was a time we wanted to do it, and now we find it annoying. Some of our relatives eat that way. Anybody here eats with their mouth open? It's a bad manner. Let's see. Where were we? She eats with her mouth open. It's very annoying. I get very annoyed when people don't say please or thank you. I get very annoyed when people don't say please or thank you. The news is very worrying. It's all about war. I'm worried about the exams next week. I'm worried about the exams next week. Done? Uh, Instead of saying it's a bad manner, I should say it's bad manners to eat with mouth open. It's a bad manner नहीं बोलना चाहिए. क्या बोलना चाहिए? It's bad manners. It's bad manners. We should not say it's a bad manner. It's bad manners too. Okay? Next page will be your homework for tomorrow because I don't think you have done it. Have you? No. You guys have to give me a minute.
Take a look at the unit 7. There are some questions there. Okay. I don't care about the answers. I just want you to tell me how would you answer those questions? Unit 7, the main book, beta. The main book. Can you see the questions, guys? Look at the questions there. But you choose A or B or C, doesn't matter to me. It's not a GK question class. But can you please tell me how you would answer? Give me your answer in a sentence. That's all. Everybody. There are total 10 questions there. So please, at the bottom of the page or at the top of the page, just write your answers in a full sentence. Okay? So you have to, whether you choose A or B or C, won't matter to me. How you write your answers. Can you show me? Write your answers. तो कहते हैं जानना कि मेरा मकसद क्या है। मैं एबीसी में उलझूंगा नहीं और ना आपको उलझाऊंगा। आप इंग्लिश के लिए हैं यहाँ पे। So look at the questions, look at the options, and then how do you answer?
Question number 1. How have you answered it? Shahid, first question. Answer it. That's stupid. Stupid, I'm calling you. You know why? Because my instructions were very clear. I don't care about the answer, A, B, or C. All you gave me is an option. I care about your English. Give me a sentence. Don't you remember I said that? Then why did you choose to give me an option? 1903. Am I checking your general knowledge? Suppose your answer is absolutely correct. Why do you think it will make me happy? You said 1903, okay? Though you said 1903, which is the wrong way to say the year. How do we say 1903? If your answer is correct, 1903 is the right answer, why should I feel happy? Am I your GK teacher? Why should I feel happy that your GK is good? When will you realize that you need to use your common sense? I, I don't understand. I said it. Didn't I say? I care about the correct formation of the sentence. Whether you choose option A or B or C doesn't matter to me. This guy tried to read 2, 3 times, failed miserably, and then he went to the option, right option, sir, 1903. तुम्हें पता अच्छे से कि सर सेंटेंस की उम्मीद कर रहा है, तुमने कोशिश भी करी, लेकिन यू फाइंड इट अ लिटिल इंसल्टिंग टू एक्सेप्ट कि नहीं हुआ. बेटा मैंने कहा ना, लूप होल छोड़ करके ऊपर ऊपर नहीं करना है कुछ भी. जस्ट स्पेंड योर टाइम. वर्चू और एक्यूमुलेट करके कुछ नहीं हासिल हो रहा है तेरा. फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कहा है कोर्स मटेरियल जो मैंने दिया ना, तुम एलिमेंट्री कोर्स के लायक हो. एलिमेंट्री कोर्स की पढ़ाई करो, तब तुम्हारा समझ बनेगा. फिर जो भी तुम पढ़ते हो उसका फायदा बेहतर मिलेगा तुम्हें. पहला क्लास का किताब हम नहीं पढ़ेंगे, हमको इंसल्ट होता है. हम 5वां क्लास का पढ़ेंगे. ये ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, आप उन्हीं जैसे टेंडेंसी शो कर रहे हैं. आप काम ही नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए. कई आपके क्लासमेट्स अभी दिखाए, अभी एक आंसर करा था उसने जिसमें आप फेल किए थे, नहीं आपको समझ आता कि क्या बोलना है, फिर नहीं समझते. तो इसको क्या कहेंगे? सामने से कोई आपको बताया जा रहा है कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप उसी जिद पे अड़ो कि हमको काम नहीं करना. आप कल भी नहीं पढ़े, परसों भी नहीं पढ़े इस कोर्स को. बताइए क्या पढ़े थे? कौन सा पन्ना? कौन सी? मेरा वीडियो देखना तो खाली पूरा काम नहीं था ना. मैंने कहा था रीडिंग डालनी है. किताब के रीडिंग टेक्स्ट है ना, हर एक यूनिट में एक रीडिंग टेक्स्ट है. यूनिट 1, somebody is writing an email, blog. Unit 2, Babar's text. Unit 3, Shilpa Shetty text. Unit 4, the White House text. Unit 5, the daughter father text. Unit 6, the teacher and Oprah Winfrey text. तो क्या क्या बात कर रहे हो यार? मैंने ये पढ़ने के लिए कहा था तुम्हें. पढ़ने की बात आई तो ये पढ़ना है दोस्तों, ठीक है. सुनने की बात आएगी. ईच यूनिट हैज एन ऑडियो लिसनिंग टेक्स्ट, लिसनिंग एक्सरसाइज हर एक में है. करिए वो भी. तो आप ये करते इसमें ग्रो करेंगे अगर आप करना चाहते हैं इंटरेस्ट लेकर के. नहीं तो ऐसे लूप होल्स लेकर के आप कहीं नहीं जा रहे. आई प्रॉमिस वन थिंग, अगर आप नहीं चेंज किए तो आपको एक बात बताता हूँ. ये लड़की जो भी आपके साथ अभी शायद आप ज्यादा बेहतर जान रहे. 2 साल दीजिए मुझे, इसको फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हुए पाएंगे और आप वैसे ही लड़खड़ाते रहेंगे अगर आपने नहीं चेंज किया अपने रास्ते तो. द राइट वे टू आंसर इज हेनरी फोर्ड. स्टार्ट कहां करेंगे? हेनरी फोर्ड सोल्ड. और ये 2 वर्ड्स आसान है करने, क्योंकि व्हेन डिड हेनरी फोर्ड सेल. सो डिड हेनरी फोर्ड सेल क्या बन जाएगा? हेनरी फोर्ड सोल्ड. ये लड़का कोशिश किया, नहीं हो पाया इससे. ये 2 वर्ड्स नहीं रख पाया साथ में.
Henry Ford sold the first T model motor car in, और उसके बाद आई डोंट केयर, उसके बाद आई डोंट केयर वेदर इट इज 1903, 1920, 2020 कोई बोलता है आई डोंट केयर, बिकॉज आई रियली डोंट केयर. आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. I don't care about your GK. Whether you know the right answer or you don't, it doesn't matter to me. So the right way to arrange the words was Henry Ford sold the. क्यों लड़ख रहा है तौसीफ तौहीद, क्यों लड़ख रहा है? मैं बताता हूं ना. आपको सब्जेक्ट समझ में आया, ना आपको वर्ड ऑर्डर समझ में आया, बस उसकी हिंदी निकाली आपने. हिंदी नहीं निकालते तो आप आंसर कैसे जानते हैं कि क्या आंसर करना है? फिर तो आप ब्लाइंड गेस हो जाएगा कि हमको कुछ नहीं पता है क्या पढ़े हैं. हिंदी तो सबसे पहले निकालते हैं लोग, हिंदी सबसे पहले निकालते हैं, जो कि करना ही चाहिए. अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो आगे क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप है क्या? हिंदी निकालना. ओके. दूसरा स्टेप क्या है? जो पढ़ेंगे तो उसकी हिंदी समझ में आनी चाहिए ना. अगर हिंदी ना भी समझ में आ रही हो तो भी सेकेंड स्टेप फॉलो करो. वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब पे ध्यान दो, कहाँ कौन सा वर्ड है. तो डिड हेनरी फोर्ड सेल, जाना पहचाना अरेंजमेंट है कि नहीं है? डिड हेनरी फोर्ड सेल, इसका आंसर क्या होगा? हेनरी फोर्ड सोल्ड. बस हो गया. क्या सेल किया उसने? हेनरी फोर्ड सोल्ड द फर्स्ट टी मॉडल मोटर कार. ठीक है. इन 1908, 1990, 1920, whatever. Question number 2, everybody. It is 8:35, so I have to wrap up actually. आप लोग एक काम करो, let me tell you. आप ना क्या करो ना कि आप रीड करो उसको और अपने हिसाब से उसका जो आंसर बनना चाहिए एक लाइन में राइट द आंसर एंड सेंड इट टू मी. ठीक है. उसमें जो एरर्स होंगे, हाँ हाँ, और इसमें हेल्प कौन सी चीज कर सकती है आपको? आप अगर वहां पे क्वेश्चन में सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर पाए सही से तो अरेंज करना आपको आसान हो जाएगा. देखो यहाँ पर क्या गलती हुई. तुमने सेल को देखा होता और उसके पहले हेनरी फोर्ड देखा होता और उसके पहले डिड देखा होता और उस पर दिमाग कहते कि ये तो प्रेजेंट पास्ट सिंपल का अरेंजमेंट है क्वेश्चन का. डिड समबॉडी डू, जैसे कहते ना, डिड योर फादर बाय, डिड यू गो, है ना? ये सब एक जैसा है कि नहीं है? इस सब में डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर V1 है. तो यहाँ भी वही चीज था ना, डिड हेनरी फोर्ड सेल. जैसे ही तुम गौर कर लेते इस चीज पे कि कर पाए थे, नहीं कर पाए होगे. ये 3 वर्ड्स पे स्पेशल अटेंशन क्या था? नहीं किया था. बात बात करोगे तो, कम्युनिकेट करोगे तो हेल्प कर पाएंगे. ये 3 वर्ड्स पे स्पेशल अटेंशन क्या था तुम्हारा? ये 3 वर्ड्स तुमसे अलग से बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे हैं, कि पूरे सेंटेंस में वो 3 वर्ड्स खो गए थे तुम्हारे साथ में? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात है? कुछ स्टूडेंट को वो 3 वर्ड सामने से आके दिखते हैं, सबके सामने सारे वर्ड्स के बीच में वो 3 ऐसे आगे आ जाते हैं थोड़े से, और दिमाग आपका कैच कर लेता है कि हेनरी फोर्ड सोल्ड बोलना चाहिए मुझे. और कुछ के लिए बाकी वर्ड्स में वो खो जाते हैं. प्रॉब्लम कहाँ है? वो डिड वाला जो स्ट्रक्चर है ना पास्ट टेंस का क्वेश्चन, वो दिमाग में नहीं है. वो दिमाग में रहता है, वो तीनों बाहर ऐसे उठ के आ जाते और आप बता देते क्या? हेनरी फोर्ड सोल्ड. तो क्या बाकी क्वेश्चन में आप ये गौर कर पाएंगे कि कहाँ वर्ब है, क्या है वर्ब, क्या है सब्जेक्ट? क्या आप गौर पर कर पाएंगे? अगर कर लिए तो फट से आंसर कर देंगे एक सेंटेंस में. और अगर नहीं कर पाए, ठीक है, तो फिर लट पलट होगा, कहाँ कहाँ शुरू करें किधर जाए नहीं समझ में आएगा. तो एक अपॉर्चुनिटी है रिवीजन का. क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, बस यही सारी चीज. जिन सेंटेंसेस की हिंदी आसान होती है उसको सुनते के साथ हिंदी बोल देते हैं. कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आता है जिसकी हिंदी आसान नहीं है तो उलझ जाते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब नहीं गौर कर पाते थोड़ा सा भी. तो थोड़ा देखिए कोशिश करके. I will help you tomorrow. Tomorrow we have a class. It's Monday today, of course. So tomorrow we will see how we will answer these 10 questions in one sentence each. And the last page of Unit 7, which I have already put in the group, will be your homework. Huh? Unit 6. Did I say? Unit 7. The last page of Unit 6. Unit 7 has just started. So that's all for today. And again, फिर से बोलता हूँ, मैं आपको बेहतर गाइड कर रहा हूँ, आप जिद्दी ना बने. ठीक है? जिद्दी ना बने, बस आप मेरी बात मान के चले ना. मैं हूं तो, लेकिन आप जिद्दी बन के काम करेंगे. आपने जो सेंटेंस लिखे ग्रुप में, क्या ही फायदा मिल गया आपका? जब आपसे एक सेंटेंस सामने लिखा है क्वेश्चन, आपको उसका आंसर भी पता है कि 1903 होना चाहिए सपोज, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे कैसे बोलना है.
तो आप ये स्थिति में होना चाहते हैं कि आपके मन में जो आ रहा है बोल नहीं पा रहे हो? नहीं होना चाहते आप इस स्थिति में। इसको, इससे दूर भागने का एक ही तरीका है, जो मैं कह रहा हूं करिए। आप जब, आपको 3-4 कमेंट्स दिए थे, जब आपने कहा था आई एम फीलिंग क्लूलेस, क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा पढ़िए, पढ़ते समय वर्ड ऑर्डर पे ध्यान दीजिए, यही लिखा था ना। मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई थी कि मैं इतने अच्छे से इनको बता पाया। साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव भी पहचानिए, यही सब कहा था ना। फिर से उसको दोहरा दो, पढ़ लीजिए जाके, जो मैंने कहा था वही करना पड़ेगा, वही करवा रहा हूं। अगर इसको, इसके आंसर सही आ रहे हैं तो ये इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान देने लगी है। आप भी ध्यान दीजिए, सही हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।